with periodic table, right? I told you I would start with nuclear science and technology, right? Uh, I have finished till basic structure of atomic structure, four fundamental forces. Okay, ना? नहीं हुआ। कोई मुझे exactly बताएगा कि exactly कहाँ? तो okay, ठीक है। हाँ, subatomic particles. Okay, thank you. Very good. Subatomic particles and other thing is we discuss about the standard model of particle physics and we put a question on standard, word standard because they it was not easy for them to include the four fundamental force that is gravity. That was the topic. ठीक है, subatomic part. Now, password है ठीक ठीक है strong nuclear force, right? ये वाला the gravity. Now we can say that the standard model of particle physics is over, but still many experts they believe that this four fundamental particle that is the Higgs boson is not the proper answer, or we can say the particle responsible for gravitational force, right? So gravity is the most misunderstood thing. ठीक है right? So dark matter, right? Antimatter, even these things being covered. We discuss about dark matter, antimatter. So we are not going to go into the detail of these dark matter, antimatter. Just focus on one thing. So gravity is nothing but what? So this is the most misunderstood things, and because of gravity, there is a bending of space and fabric, and black hole is nothing but the concentration of the gravitation frequency. So the department that I was deep mechanics. Now we talk about the types of nuclear reaction, right? So there are two types of nuclear reaction, right? Fusion reaction and fission reaction, right? Fusion reaction, I think we discussed about the fusion reaction as well, right? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये भी हो रहा है आर्टिफिशियल सन ये भी हो गया राइट अरे वही चाइनीज फ्यूजन रिएक्शन हुआ था ना नहीं ठीक नहीं हुआ तो भी मैं फिर से ले लूंगा तो उसमें नहीं जाना ठीक है so there are two types of nuclear reaction one is fission reaction another is fusion reaction now for the purpose of the uh, purpose of this topic or I would say this whatever the things going on in this particular discussion or whatever the topic I'm going to discuss, I'll discuss about the fission reaction. Okay, so whatever the reactor you see on the surface of Earth or whatever the reactor you see across the countries, all these reactors are fission reactors. Right? Right now, fusion reactor is what we can say it's a kind of in experimental phase. So China claimed that China got the technology to create artificial sun. Artificial sun is nothing but what fusion reaction or fusion reactor. If China developed the fusion reactor, that means we would say China got the technology to develop the artificial sun. If India got the technology to develop the fusion reactor, then we would say that India got the technology to develop artificial sun. There will be multiple artificial suns. Pakistani sun भी होगा, India का sun भी होगा, right? Bangladeshi sun भी होगा. Okay, everywhere you can see if country achieves these fusion reaction or fusion reactor. But for a time being now, whatever the reactor we are going to discuss, these are all fission reactors. So there are two types of reaction. I would say fusion reaction and fission reaction, right? So first, what is the difference between fusion and fission reactor? First, we'll discuss about the nuclear fission. Nuclear fission means the literal meaning of fission is meaning breakdown, to break down. Okay? Fission means breaking down. So when the atomic nucleus is of an heavy element broken into two lighter nucleus, that is nothing but what fission reaction. एक atomic nucleus है heavy atom का sorry heavy element का heaviest element कौन सा है यहाँ पे uranium. So in the whole periodic table, heaviest element is what uranium. We have already discussed about right. So heaviest element means जिसका atomic mass number सबसे ज्यादा होगा atomic mass number और proton number जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे क्या होता है heaviest element होता है right. ऐसे heaviest element को हम अगर ब्रेक करेंगे उसमें जो lighter nuclei निकलेगा lighter nuclei means lighter nuclei of two different elements तो हम उसको क्या बोलेंगे fission reaction. If involves chain reaction the new nucleus is bombarded with neutrons something like that.
For the purpose of our examination, this is just an example, right? Suppose, for example, uranium-235 is there, and if you bombard with this nucleus, why we need to bombard this nucleus? Why we need to break open this nucleus? Because we have already talked that, or we already discussed that if you want to, there is an enormous amount of energy that is being stored inside that. कौन सा force create होता है? Strong nuclear force create होता है, right? So means tremendous amount of energy is hidden inside the atomic structure. If you unleash this energy and if you have a technology to convert this energy according to the law of thermodynamics, right? You have the technology to convert this energy into another form, then you can get this nuclear energy. So, but for that purpose, you need to break open the nucleus. So there are other elements also, but why we need to break the heaviest heavy nucleus of or nucleus of heavy element? Because it consists of huge amount of energy, right? So in order to unravel this energy, we need to break open the nucleus, and we need to break open the nucleus with the help of neutron bombardment. ऐसे कोड के लिए होगा, right? उसको क्या करना पड़ेगा? Bombardment करना पड़ेगा. So we bombard this nucleus with the help of neutron. There are other candidates also. Proton is also there, neutron is also there, electron is also there. So we cannot use proton because it has a positive charge, and the whole charge of the nucleus is also positive. Okay. So suppose, for example, this is a nucleus of uranium-235. We can break open this nucleus with the help of proton, neutron, and electron, but these are not the candidates. Q, because overall charge is what? मेरे लेक्चर में टाइम इतना आप कुछ ना कुछ ठीक है. So these are not the candidate because overall charge of the nucleus is what? आएगा जरूर आएगा. टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं. ठीक है. So overall charge of the nucleus is positive charge and proton has positive charge, so you cannot use proton because positive they will remain each other. ठीक है. Electrons negative charge, electrons will get attracted, but the problem is electron. If you consider the weight of the electron, it's very negligible weight, and you cannot bombard, you cannot break open the nucleus of that heavy element with the help of electrons. It was like hitting a cricket season ball with ping pong ball. Now third ping pong ball is table tennis वाला ball. उससे तुम cricket का season ball उसको break कर possibly नहीं. Right? So electron cannot be used to break open the nucleus. Now, third candidate is what? Neutron. Neutron does not have any charge, and neutron has relatively equal mass with the mass of proton. That's why neutron having the mass we can use to break open the nucleus. And once you bombard the nucleus, this nucleus of an heavy element, nucleus of a heavy element, you can break open the nucleus of a heavy element, and that energy comes out of that nucleus. That is the what nuclear energy. Okay. So this is the logic. So that's why we need to use neutron. So if I use this neutron to bombard the nucleus of uranium-235, uranium-235 is a mass number, atomic number is what? 92. 92 is proton number. Okay. So when you bombard this nucleus, it breaks open this nucleus of uranium-235, barium and krypton diode. Okay, something like this. Now, if you see the equation, or if you add all these protons and neutrons, let's say for example, here 92 proton, okay. Now, when you break open the nucleus, barium and krypton, these two elements, they come out of that uranium-235. Barium का atomic number कितना है? 56. और krypton का atomic number कितना है? 36. तो 56 और 36, इसका मतलब कितना है? 92 प्रोटॉन मैच हो रहे हैं इससे. ठीक है, 92 प्रोटॉन मैच हो रहे हैं. बट अगर हम उसका एटॉमिक मास नंबर लेंगे 144 प्लस 89, राइट, तो कितना होता है? 230, राइट. इसका मतलब ओरिजिनली 235, लेकिन आखिरी में कितना मास आ रहा है? 233. इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन की कमी है, राइट. 2 न्यूट्रॉन्स की कमी है. प्रॉब्लम नहीं जुगाड़ कर लिख लेगा. ठीक ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि 2 न्यूट्रॉन की कमी, ऊपर से हमने एक जो बम्बार्ड किया था पहले वाला न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब एक फिशन रिएक्शन में जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो कितने न्यूट्रॉन बाहर आते हैं? 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, राइट. सो अब क्या होगा?
every chain reaction or every reaction, one neutron that gives rise to three more neutron. इसमें से हर एक न्यूट्रॉन और किसी यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को ब्रेक करता है, फिर से तीन न्यूट्रॉन आएंगे, फिर से इंडिविजुअली एक न्यूट्रॉन दूसरे किसी फिर यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे और तीन न्यूट्रॉन आएंगे. सो ये सीक्वेंस क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, चलते रहेगा. किस फॉर्मेट में, अरिथमेटिक रेट में. जैसे मान लो कि 3 है, 9 है, 81 है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस हैपेंस विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, within a fraction of second. That means if you do not control the chain reaction, it will explode, and that becomes nuclear weapon, nuclear bomb. If you do not have the technology to control the chain reaction, this uranium 235 after the bombardment, after you start this fission reaction, the chain reaction will initiate, and this chain reaction will take place within a fraction of second, and that will explode. That is nothing but what, nuclear weapon, nuclear bomb, right? So this is what fission reaction is all about. Now, so that's why whatever the reactor we are discussing right now, these reactors are fission reactors, right? Now, these fission reactors, now when we talk about the chain reaction, if you do not control the chain reaction समझ रहे हैं? If you do not control the chain reaction, then it will become a nuclear weapon. But suppose, for example, if you want to harness this energy, I will slow down the chain reaction. If I have the technology to control the chain reaction, I would control the number of the neutron also, and I would control the speed of the neutron also, right? So number of the neutron and speed of the neutron, if I control, then what would happen? I will slow down this chain reaction. I will get time to harness the energy. I will convert this energy into steam energy into kinetic energy into electric energy, right? In a nuclear reactor, whatever the chain reaction will be going on, that chain reaction will be controlled by controlling the number of the neutron and the speed of the neutron. जैसे for example ये chain reaction चल रहा है, मान लो chain reaction, अगर इस chain reaction को मैंने control कर दिया, तो I get time to convert this energy into another form. तो मैं क्या करूँगा, इसकी speed को कम करूँगा, और जो excess neutron उसको भी कम करूँगा. So I will control the number of the neutron and the speed of the neutron, so that I could control the chain reaction. Enrico Fermi was a scientist that had got the technology to control the chain reaction in the reactor. So controlling the chain reaction takes place in a reactor, right? Controlling the chain reaction takes place in a reactor, so that we can slow down the chain reaction, we can get time to convert this energy. जैसे ही ये slow down होता है chain reaction का, so in reactor, this nuclear energy is converted into heat energy. Heat energy is converted into steam energy. Steam energy is converted into, with the help of steam, you can rotate the turbines, and by rotating the turbine, you can convert this energy into electric energy in this particular instrument known as, or at this particular facility known as reactor. ये हो गया, ठीक है. कैसे होता है रिएक्टर में, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे रिएक्टर में ये होता है फ्यूल, ये क्या है, कंट्रोलिंग रॉड्स. ये क्या है, यूरेनियम फ्यूल रॉड्स में येलो कलर में, ये यूरेनियम के क्या है, फ्यूल रॉड्स. ये और जूम करके बता, जैसे ही बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन का, 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, और 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, और 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे. Now this chain reaction starts, initiates, and whatever the energy, इसमें पानी भी होता है, whatever the energy that comes out, with the help of this energy, that water turns into steam. Steam then goes to here to rotate the turbine. इससे क्या होता है, electricity क्या होता है, generate. Now suppose the temperature goes beyond the permissible limit, vertically these controlling rods, they move from top to bottom. बीच में क्या आ जाते हैं, controlling rod आ जाते हैं. इससे क्या होता है, जो न्यूट्रॉन इस साइड में जा रहा है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग रॉड. कंट्रोलिंग रॉड किसके होते हैं, कैडमियम के होते हैं, बोरॉन के होते हैं, ठीक है. सो दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलिंग रॉड you can control the chain reaction, right? And another mechanism is also there to control the chain reaction. One thing is water. This water is being pumped inside this reactor because water is acted as moderator and coolant. Water is acted as moderator and coolant. We'll talk about that. Okay. Now these are the neutrons. So the neutrons are coming in these directions, right? Neutrons are coming in this direction. I need to control the neutrons. So I will put an opposite particle before this neutron having equivalent mass. अगर मान लो यहाँ से, जैसे ना महाभारत में लिखा है, एक यहाँ से एरो आता है, रामायण सागर के रामायण में इधर से एक एरो आता है, इधर से एक एरो, इधर से आग वाला एरो आता है, इधर से बारिश वाला है, इधर से चांद वाला आता है, इधर से दूसरा, right? So these things actually, so in order to understand these things, I just give the example. Similarly, neutron is coming in this direction, so we need to control the neutron. So again, we will not use neutron, right? So electron की तो कोई होगा, तो बचा क्या है, प्रोटॉन, ठीक है. प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ से हम लेके आएंगे तो क्या होगा, उसका स्पीड भी कम होगा और एक्सेस न्यूट्रॉन भी क्या होगा, कंज्यूम होगा. एंड दिस इज हाउ वी कंट्रोल द चेन रिएक्शन. यूजिंग प्रोटॉन मींस यूजिंग हाइड्रोजन, बट इसमें हम अगर हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो और एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो थर्मोन्यूक्लियर वेपन बन जाएगा, राइट? हाइड्रोजन इज वेरी, व्हाट यू कैन सी, कंबस्टिबल, right? So I would use this hydrogen in the form of water. See, ये reactor में मुझे chain reaction control करना. Chain reaction control करना means you want to control the chain reaction means you will reduce the number of the neutron and speed of the neutron, right?
So speed of the neutron and number of neutron control करने के लिए क्या use करोगे? Moderator, right? So how these moderator act? देखें. Suppose these neutrons are coming in this direction, right? So if you put opposite particle coming from opposite direction, or you just put a particle before this forward moving neutron, तो न्यूट्रॉन को फिर से न्यूट्रॉन ही कंट्रोल करना है, तो फिर से न्यूट्रॉन नहीं रख, इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो बचा क्या है? प्रोटॉन, राइट? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोर और लेस इक्वल होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे क्रिकेट का सीजन बॉल, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं भी क्या करूंगा? यहाँ से क्रिकेट का सीजन बॉल, दोनों एयर में क्या होगा? कोलिजन होगा, राइट? ब्रह्मास्त्र मूविंग वैसे समझ लो, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी, थर्ड सिस्टम होता है, या इंडिया का एक सिस्टम अश्विनी सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है, अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई को भी चाइना, सपोज चाइना हैज लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ट्रक माउंटेड और व्हीकल माउंटेड थर्ड मिसाइल होती है, वो क्या होता है? इमीडिएटली इनकमिंग प्रोजेक्टाइल होता है, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करता है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है साथ, जैसे ही लॉन्च होता है यहाँ से मिसाइल फायर होता है और उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। दिस इज अ फंक्शन हाउ दिस एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं? एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? This is how these work. Now similarly, when you put a particle having equivalent mass before this neutron, you can control the number of neutron also, you can control the speed of the neutrons, right? तो स्पीड तो कम हो गया, नंबर कैसे करेंगे? कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ, क्योंकि जो तुम प्रोटॉन यूज कर रहे हो और जो न्यूट्रॉन का जनरेशन में बहुत ज्यादा है, राइट? ये तीन भी गायब हो गए तो भी तीन बच जाते। सो what was the purpose of discussion? If you want to control the number of the neutron and the speed of the neutron, you would use protons, right? Now protons cannot be used in pure form because hydrogen cannot be in pure form, pure hydrogen नहीं होता कभी, ठीक है? So hydrogen is used in the form of water. If you use the hydrogen in the form of water means H2 में क्या होता है? Hydrogen means कौन सा आइसोटोप होता है? प्रोटियम, something like this. So this hydrogen used means the proton is used in the form of this water. So when you use the water, then you can control the speed of the neutron and number of the neutron. And another purpose is this water is also act as coolant. जैसे रेडिएटर होता है ना कार में, कूलेंट बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में वाटर क्या यूज होता है? एज अ कूलेंट, एज अ मॉडरेटर. सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन फिशन रिएक्टर, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट also, and water is used as a moderator also. Moderator means that thing controls the chain reaction. That things control the number of the neutrons and the speed of the neutrons. ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है? Okay. Now we got the technology, we got the substance that would control this chain reaction, right? And this is how they use these water. But there are various kinds of reactors. जैसे for example light water होता है या boiling water होता है, जिसमें ordinary water use करते हैं as a model. But when you use pressurized heavy water reactor, then in that case we use heavy water. तो heavy water क्या है? देखते हैं. Now there are three types of isotopes of hydrogen. Isotope means जिसका proton number same, mass number different. We used to mug up it in our school days, but nowadays I can explain with the help of these formulas या equations, ठीक है? जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं. एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है? प्रोटियम मींस ये अगर सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर चेंज होगा, तो प्रोटियम में मास नंबर 1, मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा. मास नंबर 2, प्रोटॉन नंबर 1, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 होगा. ये भूल लेते हैं. दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन. ये क्या है? प्रोटॉन. अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो फिर क्या करूंगा मैं? 2 - 1. इसमें ट्रिटियम मींस एटॉमिक मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2. सो ये सबसे हेवी एलिमेंट, हेवी आइसोटोप कौन सा होगा? ट्रिटियम. उसके बाद हेवी कौन सा होगा? ड्यूटेरियम. सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप कौन सा होगा? प्रोटियम. जो हमारा ऑर्डिनरी टैप वाटर होता है उसमें कौन सा आइसोटोप होता है? प्रोटियम. जो तुम्हारा खेलने वाला गुब्बारा होता है उसमें कौन सा हाइड्रोजन होता है? प्रोटियम 1. इससे हेवी क्या बन जाएगा? ड्यूटेरियम. नाउ इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ वाटर, उसको D2O भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ड्यूटेरियम ऑक्साइड मींस हेवी water, ठीक है? So this heavy water is used in pressurized heavy water reactor. This light water is used in light water reactor, right? We'll talk about these things later on. समझ में आ रहा है? So finally what we understood that water is used as a coolant also, water is used as a moderator. Moderator means you want to control the chain reaction. For that purpose you control number of the neutron and speed of them. I hope you understood it. Okay? So this is nothing. These type of things you can do in fission reaction, where fission means when the nucleus of a heavy element breaks into nuclei of two lighter element. That is nothing but what? Fission reaction. So this is what? Fission reaction. So whatever the reactor India has or whatever the reactor other countries they have, all these reactors are what? Fission reactor. But nowadays
Many countries they are running after this fusion reactor. Why this fusion energy is eco environment friendly energy? We'll see later on. But first, we need to talk about whether these fusion reactors are environment friendly or not. When you use uranium 235, okay, sometimes you get disposal or raw material, sometimes you get spent fuel, sometimes you use whatever a discarded material, and that is also radioactive, radiologically active material. So that's why sometimes this fission reaction is not environment friendly, right? So nuclear energy is renewable energy, but not environment friendly energy, right? So क्यों renewable energy? क्योंकि यूरेनियम 238 के बारे में बोल रहा हूँ, otherwise वो renewable energy भी नहीं है. But many experts they think that nuclear energy is renewable energy, ठीक है? But not definitely not environment friendly energy. But if you calculate, but yes, definitely one thing is there. Which with the help of nuclear reactor, why it is not environment energy? या तो मैंने कोल के बारे में लिखा environment friendly की नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बाहर निकल जो कि एनवायरमेंटली क्या होता है डिग्रेडेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल चेरनोबिल एक्सीडेंट है या 3 माइल्स आइलैंड है या फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर एक्सीडेंट है. At these places, when these nuclear accident took place, then you can see many people they died, many people they suffer from congenital anomalies or what we can say birth-related defects because of this radiation. And in fact, Chernobyl accident जहाँ पे हुआ था यूक्रेन में प्लेस अभी वहाँ पे एक सिंगल ग्रास भी नहीं है, राइट? रेडिएशन से पूरे माइक्रोबायोटिक फ्लोरा फाउना सब क्या हो गए डिस्ट्रॉय हो गए. So that is not considered as environment friendly. But if you consider, if you compare this nuclear energy with the thermal energy produced from coal, then in that case, it would be considered as environment friendly. Q, because you see this equation, you see this comparison. See, this energy equivalent of 3 tons of coal or about 600 gallons of fuel oil per day, which when burned produces approximately 1/4 ton of carbon dioxide. इसका मतलब क्या है? 1 kilogram of uranium, 1 kilogram of uranium produces 2 to 3 million times energy equivalent of oil and coal. ठीक है? Near corresponds to nearly 10,000 kg of mineral oil or 14,000 kg of coal. इसका मतलब 14,000 kg और 10,000 kg of mineral जब जलाओगे इतना इलेक्ट्रिसिटी तुमको कितने 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम से मिलेगा, ठीक है? So that's why in that case when you compare with the thermal energy or coal energy, that nuclear energy would prevent this carbon dioxide from entering into the atmosphere. That's why sometimes we can think that or we can say that nuclear energy is environmental friendly or carbon friendly energy boost. या उसको बोल सकते हैं कि it will help you to bring down the global rise of average temperature and negative consequences of climate change because it prevents carbon dioxide from entering into the atmosphere if you use nuclear energy instead of coal energy. Otherwise, plain answer क्या है? It's not an environmentally energy. ठीक? Yes, I'll talk later on. That was a discussion I'm going to talk when I'll discuss about three-stage nuclear. Don't worry. Okay, three-stage nuclear program and discuss currently how to dispose of these nuclear waste. Okay, generally whenever you use uranium 235, you hardly get any disposal. But whenever whenever you use uranium 238, you get spent fuel, and spent fuel is very dangerous material. There are different methods and technology to get rid of this. What we can spent fuel or discarded fuel or used fuel. Right? We'll talk later on. Okay. For time being, इतना समझ में है? ठीक है. Now this fission energy, now we are going to what are the disadvantages? Very dangerous. It's explosive. It creates harmful waste products. Not a renewable energy source. It can develop long-term health issue. It has a high startup cost. These are the disadvantages of nuclear energy, nuclear reactor. Now, next topic is fusion reactor or fusion reaction. We have discussed about fission. Now we are going to talk about fusion. The only place till now, only place where fusion reaction is taking place is what? Sun, right? So, sun is the place where fusion reaction is going on. Okay. And so, if you see this, the structure of the sun, heavy elements are concentrated at the core of the sun, and lighter elements. Obviously, lighter element क्या होंगे ऊपर हो, तो हाइड्रोजन क्या है सबसे lightest element, right? So if UPSC asks you fusion reaction is taking place inside the sun or on the surface of the sun, what would be the answer? Surface of the sun. Why? Because hydrogen being the lightest element, वो क्या होगा ऊपर ही होगा, right? So that's why the fusion reaction is taking place on the surface of sun. Now, this fusion reaction is what? In the fusion reaction, one hydrogen or elements of two lighter nuclei. Plain definition क्या है? Elements of lighter nuclei. Fusion हमेशा lighter nuclei नहीं होता, heavier nuclei में नहीं होता, ठीक है? When these two nuclei combines and that gives rise to nucleus of an heavy element, that is nothing but what? Fusion reaction. So सबसे lightest, remember one thing, fusion always takes place in between lightest element. उसका रीजन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तुम फ्यूजन में क्या कर रहे हो? इस हाइड्रोजन को भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी पॉजिटिव चार्ज. नेचर से सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और तुमको एक साथ उनको मिला रहे हो. तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो इसलिए हम लाइटेस्ट एलिमेंट यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? So these hydrogen fusion reaction consists of fusion of hydrogen and hydrogen that gives rise to helium. But ये कौन सा hydrogen? Fusion always takes place between deuterium
and tritium. That gives rise to nucleus of helium and one neutron that comes out of that nuclear reaction. Deuterium means atomic mass number 2, tritium means atomic mass number 3, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है 4, एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसका मतलब 3 और 2 5 होना चाहिए, 4 ही आ रहा है, यहाँ पे तो बम्बार्डमेंट नहीं कर रहे, तो एक न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोटॉन तो मैच हो रहा है, राइट, एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक प्रोटॉन यहाँ पे, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, इधर 2 है, इधर 3 है, 5 आना चाहिए, हीलियम में 4 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो तो क्या बदलेगा फिर न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन बाहर आ रहा है, न्यूट्रॉन हैज मास and whenever that neutron comes out, we saw in the fusion reaction also, neutron comes out means energy comes out, mass comes out means energy comes out, okay, and Einstein gave this equation E equal to mc square, whenever you see mass means energy, तो neutron बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या बाहर आ रहा है, energy बाहर आ रहा है, this is what fusion reaction, this is the reaction that is going on the surface of the earth, right, so scientists they started to simulate this fusion reaction on the surface of earth. So whatever the reaction is going on the surface of sun, scientists they are imitating, they are simulating such reaction on the surface of earth. Many companies they came in fact Google also got the breakthrough, Microsoft also got the breakthrough. In fact both these companies superficial they look like hostile to each other or rival to each other, but constantly they have a joint venture to develop fusion reactor. Okay, so both these countries they came together and they decided to carry out this fusion reactor. So China also claimed that it got the technology to develop the fusion reactor, and that's why you can say when China says that it has developed the artificial sun, means China got the technology of fusion reactor. Okay, समझ में आ रहा है? Now why fusion energy is known as energy of the future? Exam important for example because nowadays every country, every company is running after this fusion energy, and if you achieve the fusion reactor, that means you won't have to face any energy related problem. Recently, Russian Prime Minister or Russian President made a statement that in future Russia will develop miniature hydrogen engines. Right? Even American NASA company has also used this miniature fusion reactor to carry out these intercelestial or interplanetary journeys. ठीक है? तो क्या हम application में देखेंगे? समझ में आ रहा है? So this is what fusion reaction. Deuterium और tritium में होता है. Deuterium, tritium that gives rise to helium. ठीक है? तो helium में एक न्यूट्रॉन और helium न्यूट्रॉन बाहर आता है. That's nothing but what energy. Now, even before China or Google had claimed that they got this technology, many countries, or what we can say, 9 countries, they came together to develop the fusion engine. And they started one project, उसका नाम था International Thermonuclear Experimental Reactor. International Thermonuclear Experimental Reactor. It's a joint venture between 9 countries, right? So we are going to talk about ITER. What is this ITER? So that means when China says that China got the technology to develop miniatures, and China is not only country. In fact, along with India, there were few countries they started one project near France-Switzerland border. One where this project is located. उसका नाम है The Way. उसका नाम क्या है? The Way. उसको alternatively क्या बोलते हैं? International Thermonuclear. Thermonuclear means thermonuclear. Thermo means hydrogen or temperature ऐसा समझो. ठीक है? Nuclear means हाइड्रोजन. अब ये क्या है, मैं थर्मोन्यूक्लियर का टर्म समझा के देता हूँ, बट फॉर टाइम जस्ट याद रखो लॉन्ग वन. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 9 कंट्रीज. कौन कौन से? चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड यूएसए. एवरी कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट annually $1 billion, right? But India recently has stopped contributing to this project. That's why many experts across the world they scolded India and they asked India why India is not paying its dues. And another thing is how they develop these nuclear reactor and what is the contribution of India in the international thermonuclear experimental reactor. That is nothing but what? Fusion reactor. Suppose for example, if you achieve this fusion reaction only for 1 minute, मान लो fusion reactor develop कर दिया और 1 minute का fusion reaction achieve कर लिया, then you would generate enough energy that will provide or that will meet the energy need of the world for 1 day. एक दिन का overall जो वर्ल्ड का जितना भी एनर्जी नीड है वो सेटिस्फाई हो सकता है 1 मिनट के फ्यूजन रिएक्शन से. So hydrogen is very good fuel, environment friendly fuel. Okay, but it's not a renewable fuel. Okay, okay. Now how they got the technology to develop the hydrogen, these artificial, so international thermonuclear experimental reactor. Now why it's not possible? जैसे मैंने क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है. Nuclear fusion is that it's the energy source of the future and always will be. ये sarcastically question है कि always will be means not. I am talking about impossibility of this fusion reaction. Will be. Comment why it is not easy to get fusion energy. In short, why it's very difficult to get the fusion energy. The reason is if you start to simulate what is going on the surface of sun, if you start getting miniatures on the surface of sun,
The first question arises, where would you hold the temperature? Because sun के अराउंड कितना टेम्परेचर है 51,000 डिग्री सेल्सियस. आप गूगल पे सर्च मत कर लेना, ये मिलेगा नहीं. जो गूगल पे जिसने भी ये फिगर डाले वो भी गया नहीं, और मैं भी नहीं. तो मैं 50,000 लिख सकता हूँ या 21,000 मेरी. नो बडी वेट. So, but approximately 51,000 degrees Celsius. Now, suppose you started creating miniature sun on the surface of sun, then you have to handle this 51,000 degrees Celsius. We are too much concerned about the rise of temperature by 1 degree Celsius. Now, imagine the situation where you have to face 51,000 degrees Celsius increase, right? It's very how to hold this massive temperature. Tell me the element that can withstand. Tell me the material that can withstand at such a great temperature. Even if you build a reactor, concrete wall, iron wall, जो भी tungsten, जो भी तुम्हारी element है, whatever element you come across, not a single element on the surface of Earth that can withstand at such a high temperature. Then how to hold the reactor? What kind of material you would use to develop the wall of reactor so that you can hold this temperature? और वैसे water use करें तो water fraction of second भी evaporate convert नहीं हो, right? तो क्या करोगे? So they got the clue from the sun itself. So on the surface of sun, they saw some spots. which can possible. So सिर्फ moon पे दाग नहीं, तो सूरज पे भी दाग. And these spots are nothing but what? Sunspots. These sunspots, scientists, when they found these spots on the surface of sun, these spots are nothing but localized magnetic field. And surprisingly, they found relatively lesser temperature as compared to surrounding temperature at these localized magnetic field spots. तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर मैग्नेट रखेंगे, यहाँ पे प्लाज्मा एनर्जी रखेंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर दो, रिपेल कर दो. Magnetic field is actually it repels plasma energy. At 51 degrees Celsius temperature, energy goes into this stage, fourth stage of matter. वो क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है. प्लाज्मा स्टेट मीन्स अब तो बोल सकते हो कि एक्सट्रीम आयोनाइज स्टेट, जहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम अवेलेबिलिटी ऑफ क्या बोल सकते हो, चार्ज. So these things they repel each other. Now scientists got the technique or technology that if they could build a reactor wall of magnet, then whatever the energy that will be generated at the core of the reactor, that energy will be held inside the reactor because of these magnet. क्योंकि magnet उसको क्या करेगा, push करेगा, repel करेगा. And this magnetic wall is known as cryostat. And India is the most important country in this experiment because this cryostat or magnetic wall is developed by LMD company, Indian company. Okay? So India has contributed a lot to develop these international thermonuclear experiment. But the very original design of the reactor is actually developed by Russian engineers. But because ये इसको कोई समझने की जरूरत नहीं, सिंपल है. ये यहाँ से एनर्जी, ये प्लाज्मा एनर्जी वायलेट कलर पर्पल कलर में, ये प्लाज्मा एनर्जी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक वॉल, ठीक है. तो इसमें डिटेल में नहीं जाते. सो मैग्नेटिक वॉल एंड प्लाज्मा एनर्जी दे रिपेल ईच अदर. दिस क्रायोस्टैट इज डेवलप्ड बाय इंडियन एलएनटी कंपनी. ठीक है. नाउ ठीक है. ओके. सो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर and India is a part. So ऐसा क्वेश्चन आ सकता है में all of the foreign countries are member of international thermonuclear experimental reactor except. So just try to remember China and India. Okay. European Union is also big. So why is fusion energy is environment friendly? Because एक तो deuterium tritium कोई radioactive नहीं. You are getting too much amount of energy. In fact, if you compare with fission and fusion, with the help of fusion you get tremendous amount of energy than fission. And in fusion reactor or in fusion reaction, you use hydrogen, that is deuterium and tritium. They are not radioactive. And whatever the substance whatever the substance that comes out of this reaction, वो क्या, helium भी radioactive नहीं. तो इसका मतलब क्या, clean energy, pure energy, right? Without any spent fuel, without any discarded fuel, without any environmental damaging fuel, you can see in this reaction. So that's why fusion energy is known as energy of the future. समझ में आ रहा है? Now this international thermonuclear energy experimenter, even before they had got this technique, many private companies like Google and other companies they got this breakthrough. तो अभी गूगल के पास भी टेक्नोलॉजी, चाइना के पास, चाइना क्लेम करता है, चाइना हमेशा क्लेम करता है, बट किसी को पता नहीं कि रियली चाइना के पास है कि. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन. समझ में आया? फिशन मींस ब्रेकडाउन, फ्यूजन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर एलिमेंट दैट गिव राइज टू न्यूक्लियस ऑफ हेवी एलिमेंट. सो if you have to compare between these two reactions, obviously nuclear fission is environment friendly in reaction, and nuclear fusion reactor always very control paper fusion reactor rather than fission reactor, but impossibility of this fusion reaction. So but scientists found the technology to hold this temperature. So what is the current situation? Current situation, only one person
which has been able to develop the fusion reactor. पहले किसने डेवलप किया? रशिया ने। उसके बाद दैट रिएक्टर टोकामेक रिएक्टर, उस डिजाइन का नाम है टोकामेक रिएक्टर। ये जो डिजाइन दिखा है ये टोकामेक इंजन, ये टोकामेक रिएक्टर वाज डेवलप्ड बाय रशियन साइंटिस्ट एंड दैट because of the Russian disintegration that reactor went to Ukraine से यूरोपियन यूनियन में गया। यूरोपियन यूनियन को बोला हमारे बस की बात नहीं, तो यूएसए में गया, यूएस ने फिर से बोला हमारे बस की बात नहीं, एक काम करते सबकी बस की बात। तो वही रिएक्टर फिर से आईटीआर में आ गया एंड दे नाउ इट हैज बिकम द जॉइंट वेंचर। समझ में आ रहा है? ठीक है। बट टिल नाउ टिल डेट ओनली वन पर्सन दैट ही हैज बीन एबल टू डेवलप द फ्यूजन रिएक्टर एंड दिस पर्सन इज व्हाट? मिस्टर ऑक्टोपस इन स्पाइडरमैन मूवी, राइट? मिस्टर ऑक्टोपस इन स्पाइडरमैन मूवी इज द ओनली पर्सन देन यू कैन सी दैट पर्सन डेवलप द फ्यूजन रिएक्टर। स्पाइडरमैन अगर किसी ने देखा होगा मिस्टर ऑक्टोपस, तो उसमें जो जिसको फ्यूजन रिएक्टर देखना होगा वो वही। इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ओके। नाउ नाउ विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या? देखते रेडियो एक्टिविटी समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आराम से जाते, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। रेडियो एक्टिविटी मींस समझ लो, थोड़ा फिलोसॉफिकली जाते हैं, बाद में टेक्निकली जाएं। लाइफ में क्या आता है? हर किसी को सेटल होना है, रंगीला का डाला है। लाइफ में क्या आता है? सेटल होना। सेटल मींस सेटल होने के लिए क्या होना चाहिए? ईगो मेल्ट होना चाहिए। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल दीस टू कपल, दिस द कपल, दीस टू फेलोज, राइट? और यहाँ पे एक पर्सन, happy marriage relation depends on, in the relationship depends on, शादी हो गया नहीं है, एक्सपीरियंस कहते हैं, इमीडिएटली आंसर आया। You need to lose ego, या फिर first person who found this particular thing scientifically is what? Buddha। ठीक है, everything that goes up comes down, Adani। everything that everything that is created is being destroyed। everything that comes in this universe it has to go, right? सब ऐसा ऐसा होना है। Now this particular thing बुद्धा, तो बुद्धा क्या बोलता है कि अगर तुमको पीसफुली रहना है, what is the secret of happiness, right? Secret of happiness is what? दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भूलना। That is the when in that case you will find your soul, you will find your peace, right? In this discussion I would say no need to lose ego। अगर इसका मतलब क्या है? जिसको ईगो आता है उसके पतन की शुरुआत होगी, right? If you want peaceful life you need to lose ego। So uranium 238 being the heaviest element in the periodic table, obviously if you are suppose heaviest element किसी कुछ इस पर जाते जो मतलब हेवी करारी आया तो obviously तो ईगो होगा, मैंने कॉन्कर की है। So when you get through this civil services examination some people they cannot digest it। It's very difficult to digest the subject। उनको लगता है मैंने क्या नहीं किया, अगर उसको IAS मिल जाए तो बस उसके जैसा कॉन्कर कोई नहीं। Sometimes very difficult to digest it, and there some people they even claim that they never used to sleep, they used to study 18 to 19 hours। बाकी लोग भी पागल हो जाते हैं, 60-20 मुझे भी करना है, नहीं होता है, राइट? सो यूरेनियम 232 कितना ईगो होगा, वो हेवीएस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तुम लोग क्या चिल्लर लोग हो, इधर देखो मास नंबर देखो, मास 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 दो, ठीक है, राइट? सो इफ यू लूज योर मास यू लूज योर मास। तो इसका मतलब क्या है? you need to lose your ego so that you will have that peaceful situation। So radioactivity is a similar way when the heavy element loses mass, right? That loses mass in the form of alpha particle, beta particle and gamma radiation। Now question arises, वो क्यों मास लूज करे? क्योंकि वो नेचर है, क्योंकि यूरेनियम आया तो उसको मास लूज करना है, अदरवाइज दूसरे एलिमेंट नहीं आए। जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो इसी पे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ। हर किसी का टाइम आता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले हाइड्रोजन ही बोलेगा, मैं लाइट है मेरा भी टाइम है, राइट? तो हाइड्रोजन फ्यूज होगा, फिर बाद में उसका क्या होगा? हीलियम होगा, ठीक है? हीलियम में और एक हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या बनेगा? लिथियम होगा। लिथियम में हाइड्रोजन ऐड होना इसका मतलब प्रोटॉन ऐड, ठीक है? इसलिए मैंने क्या बोला था, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हाइड्रोजन आई वुड यूज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बोले हाइड्रोजन बोलो सेम, ठीक है? If I go on adding hydrogen into that element, you will find different atomic number and different element that comes out। That's why periodic table, in periodic table, every element arranging ascending order of atomic number। तो atomic number भी हाइड्रोजन ऐड होते जा रहा है। कभी किसी ने पूछा नहीं कि हाइड्रोजन on the surface option ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऐड होके क्या होता है? हेलियम। हेलियम के बाद क्या? हेलियम के बाद वहां पे क्या होगा? लिथियम। लिथियम के बाद क्या होगा? बेरियम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि ऑन द सरफेस ऑफ सन तुमको बेरियम मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा।
लेकिन हमारे स्कूल तक क्या पढ़ा है, हीलियम। तो क्या होगा आखिरी में, क्या हो सकता है, ऐड होती जाएगा एल्यूमिनियम सिलिकॉन, आखिरी में आएगा आयन। तो कोर ऑफ द सन, कोर ऑफ द डाइंग स्टार, कोर ऑफ एनी स्टार क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। और आयन के बाद क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, आयन के बाद फ्यूजन होते होते, हाइड्रोजन ऐड होते होते पीरियोडिक टेबल का आखिरी एलिमेंट कौन सा, यूरेनियम, राइट। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन ऐड होते जा रहा है, लिथियम मीडियम और पीरियोडिक टेबल का आखिरी 92 वाला एलिमेंट आ गया यूरेनियम, हेवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हेवीएस्ट ग्रेविटी होगा। तो इमेजिन करो कि ये सन का शेप भी क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। इसलिए मैंने वो डार्क मैटर बोला, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ब्लैक होल। एक्सट्रीम concentration of gravity, extreme gravitational field because of what, यूरेनियम या हेवी एलिमेंट। लेकिन हेवी एलिमेंट तो इसका मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव चार्ज, वो रिपेल होने की कोशिश करेगा, और जैसे रिपेल होने की कोशिश करेगा क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। उसको ही बोलते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन। आप समझ रहे हैं। बट साइंटिस्ट दे, मेनी एक्सपर्ट्स दे बिलीव दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। मैथ टू मैथ फ्यूजन का आखिरी प्रोडक्ट होता है आयन, तो उसके डिटेल में नहीं आएंगे, आयन होता है यूरेनियम। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये बोल सकता है हाइड्रोजन, आज तो मुझे सिर्फ लाइटेस्ट एलिमेंट बोल, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम आई वाज एन यूरेनियम। कैसे देख, नाउ दिस यूरेनियम हैज यूरेनियम 238 या नेचुरल यूरेनियम, ये क्या है, हेवीएस्ट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा एनर्जी यूज करेगा। क्यों यूज करेगा, मास क्यों यूज करेगा, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसी। डिस्टर्बेंसी क्यों, कहा 92 प्रोटॉन और कहा 1 कितने होगा, 146 न्यूट्रॉन, राइट। टोटल कितना हो गया, 238। ठीक है, 92 ये प्रोटॉन नंबर होता है, और मास नंबर मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन। ठीक है, तो 92 प्लस 146 कितना हो गया, 238। तो 146 न्यूट्रॉन और 92 प्रोटॉन, डिस्क्रिपेंसी बहुत है। So these uranium tend to lose some mass in order to get that stable condition। धीरे धीरे हर किसी को स्टेबल होना जरूरी है। मान लो कि यंग एज में तुमने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, तो बुढ़ापे में क्या होता है, शांत हो जाता, बुढ़ापे में नहीं अभी क्या कितना कमा के क्या करना, राइट, तुम रिटायरमेंट ले, क्यों, पीसफुल लाइफ। वैसे यूरेनियम वंस अपॉन अ टाइम दैट यूरेनियम holds too much ego, that uranium has to lose some ego। This ego is, this uranium loses this energy in the form of alpha particle, beta particle and gamma radiation। This is nothing but what, radioactivity। What is radioactivity, radioactive element or heavy element that tends to lose the mass. This mass is released in the form of alpha particle, beta particle and gamma radiation, because this mass is converted into energy। That's why these particles are also known as energy particles। इसलिए gamma radiation भी dangerous होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। So this is the definition of radioactivity। This is the definition of radioactivity। ठीक है, और ये सब तुम मैरी क्यूरी, हेनरी बैकवेल, ये सब तुम पढ़ लो। रेडियो एक्टिविटीज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। इसमें से सबसे डेंजरस कौन सा होता है, गामा रेडिएशन। क्यों गामा रेडिएशन डेंजर, बिकॉज गामा रेडिएशन कैन इजीली पास थ्रू योर स्किन, पास थ्रू योर बोन्स, पास थ्रू योर ऑर्गन्स, एंड व्हेनेवर इट पासेस थ्रू योर ऑर्गन व्हाट हैपेंस, ये तुम्हारे डीएनए जो होता है, इसके सीक्वेंस को बोलते हैं जीन्स। ये सीक्वेंस बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये गामा रेडिएशन क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, एंड जीन में क्या करता है, म्यूटेशन लाता है। Mutation is sometimes beneficial, sometimes dangerous, but most of the cases mutation is not good for your body। And if a person suffers from this radiation mutation, then the gene defect is created and you may die because of cancer। So that's why gamma radiation is responsible for cancer। समझ में आ रहा है। So alpha radiation, beta radiation, beta particle emission and gamma radiation। समझ में आ रहा है रेडियोएक्टिविटी क्या है। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन मींस व्हाट, अगर मैं मास निकल रहा है यूरेनियम 238 से, जो भी हेवी एलिमेंट उससे मास निकल रहा है, मास निकल रहा है इसका मतलब क्या है, मास किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। तो इमिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मींस इमिशन ऑफ मास, राइट। तो मान लो ये दो कलर के प्रोटॉन बाहर आए और दो कलर के न्यूट्रॉन, अगर दो प्रोटॉन आएंगे तो दो न्यूट्रॉन भी आएंगे, राइट। एक अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन, एंड कितने न्यूट्रॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। इससे ओरिजिनली एटम, ओरिजिनल एटॉमिक जो न्यूक्लियस है, if suppose originally atomic nucleus of uranium 238 loses one alpha particle, that means loses some mass to one alpha particle, next वाला एलिमेंट जो तैयार होगा उसका मास नंबर कितने से कम होगा, स्कूल बेसिक्स नहीं समझ में, स्कूल में ये यूरेनियम 238 है, इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है, दो प्रोटॉन बाहर आएंगे, दो न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन बाहर आएंगे तो प्रोटॉन नंबर भी तो चेंज होगा। अगर दो प्रोटॉन बाहर आएंगे तो यूरेनियम 92 नहीं रहेगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, 90 हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कम हो रहा है। तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन नंबर बदलता है तो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस और आधार कार्ड बदल जाएगा।
Every element has Aadhaar card, and this Aadhaar card changes or identity changes when you see the change in the proton number. तो यहाँ पे दो प्रोटॉन बाहर, जैसे मान लो समथिंग लाइक दिस, ये मान लो 1 2 3 4 ऐसे कितने 146 न्यूट्रॉन है, और रेड कलर में कितना प्रोटॉन है 92 1 2 3 4 समथिंग लाइक। अब ये दो इधर आ गए और दो न्यूट्रॉन इधर आ गए, मास लूज हो रहा है। तो आफ्टर इमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल इन द रेडियो एक्टिविटी, एन एलिमेंट लूजेस एटॉमिक मास नंबर बाय 4। क्यों 4? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन क्या है, मास नंबर है ना, तो 1 2 3 4, और प्रोटॉन नंबर कितने से कम होगा, 2 से, राइट। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल एलिमेंट है अगर वो मास लूज करता है थ्रू अल्फा पार्टिकल इमिशन, तो उसका एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होगा, और एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, 2 से कम होगा, राइट। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट ये हम स्कूल में मतलब करते हैं, राइट। सो आफ्टर वन अल्फा पार्टिकल इमिशन दैट एलिमेंट लूजेस मास नंबर बाय 4 एंड प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर बाय 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? किस कितने लोग नहीं समझ में? ठीक है, मान लो मुझे पता है तुम्हारे चेहरे से पता है, ये पर्सन, दिस पर्सन पुट्स हिमसेल्फ ऑन डाइटिंग, राइट। ये पियर शेप होगी, राइट। अब इसको ऐसा वाला इमेज बनाना है, इसको मास लूज करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज करें या सर्जरी तो करें, राइट। तो ये मास कम हो रहा है ना, तो मास, ये बायोमास ऐसे समझ, तो मास किधर जाएगा, तो मास कंज्यूम होगा, राइट। तो सिमिलरली ये यूरेनियम 238 में मास निकले, तो मास निकला, इसका मतलब क्या है, जो मास किससे बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बन रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलना मीन्स व्हाट, मास निकल, समझ में आ रहा है, राइट। सो इन पीरियोडिक टेबल इफ एलिमेंट लूजेस, ये यूरेनियम 238 है, 92 प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। आफ्टर वन अल्फा पार्टिकल इमिशन प्रोटॉन नंबर कितने से कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आधार नंबर बदल के उसका एक्सिस्टेंस उसका सरनेम बदल जाएगा। नेक्स्ट वाले एलिमेंट क्या होगा, थोड़ी, फिर से उसमें थोड़ी पे रेडियोएक्टिव है, उसमें से भी अल्फा पार्टिकल इमिशन होगा, तो अल्फा पार्टिकल में हमेशा प्रोटॉन नंबर कितने से कम, 2 से, तो 90 माइनस 2 80 है, राइट। वो भी रेडियो एक्टिव है, वो भी ईगो में आएगा, लेकिन उसको ईगो लूज करना जरूरी, मास लूज करना जरूरी, मास लूज करना मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम करना जरूरी, राइटिंग करना जरूरी। सो 88 माइनस 2 रेडॉन 86, फिर से वो अल्फा पार्टिकल इमिशन करेगा, पोलोनियम, पोलोनियम इज वेरी डेंजरस एलिमेंट, ठीक है। हाफ लाइफ कितना होता है, 3 मिनट। पोलोनियम के बाद क्या है, लीड, ठीक है। लेकिन लीड के बाद क्या होगा, लीड रेडियो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी। नाउ मीन्स इमेजिन करो कि यूरेनियम टर्न्स इनटू व्हाट, लीड, राइट। एंड सपोज यूरेनियम टेक्स समथिंग अराउंड 3 बिलियन ईयर्स टू टर्न इटसेल्फ इनटू ए लीड। इसका मतलब आज लीड क्या बोलेगा, तुम्हारे लीड टेंशन में लीड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है, मान लो तुम्हारे पास लीड है, हाँ वो लीड क्या बोलेगा, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज एन एलियन, तुम क्या बोलोगे, ठीक है। लेकिन अभी लीड क्या बोलेगा कि अभी मैं लीड, लेकिन एक टाइम में यूरेनियम था, धीरे धीरे मेरा मास लूज होके क्या हो गया, मैं लीड बन गया, पीवी बन गया, तो अभी मैं स्टेबल हो गया, अभी कोई रेडियो एक्टिविटी ना लूज करने के लिए, ना होने के लिए, ना लेने के लिए, मैं डिमांड प्राप्त, राइट। तो सपोज मान लो 3 बिलियन ईयर्स टू टाइम लगा, कितना, 3 बिलियन ईयर्स। नाउ सपोज यू फाउंड ए रॉक सैंपल, उसमें तुमको लीड मिला, राइट, और उसका कॉन्सेंट्रेशन मिला एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अगर मान लो उसी रॉक सैंपल में 100% यूरेनियम, लेकिन अभी सारा लीड, तो जहां पे लीड मिलता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस रॉक का एज 3 बिलियन, इसको यूरेनियम लीड डेटिंग बोलते हैं, राइट, यूरेनियम लीड डेटिंग, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद मान लो ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस एनर्जी
कुछ तो भी कॉस्मिक एनर्जी, कुछ तो भी एक्सट्रीम पार्टिकल मूवमेंट वाला एनर्जी, और ये चीज कंटिन्यू हो गई तो ऐसा नहीं है। बट ये भी है कि ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि नेचर इज ऑलवेज इन अ साइक्लिकल वे। तो अगर ये ऐसा जा सकता है तो आखिरी एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, you are holding a balloon and in that balloon hydrogen gas is there and that hydrogen says once upon a time I could be and could be and will be। ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक हंच बता रहा हूँ, एक्सपर्ट। इनफैक्ट ये सब साइंटिफिक स्टडीज है। इफ यू क्रॉस चेक इट ऑन गूगल तो यहाँ तक रुक जाएगा और फ्यूजन यहाँ तक रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर यूरेनियम ऐसा नहीं करता है तो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। तो जितने भी एलिमेंट मुझे थोरियम, रेडॉन, पोलोनियम, लीड, लीड को कहीं ना कहीं तो इसका मतलब यूरेनियम को कहीं ना कहीं तो लूज करना पड़ेगा तो ही लीड होगा। समझ में आ रहा है? सो मींस मोस्ट ऑफ these elements they are created because of this uranium 230। That's why it needs to lose mass। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? So this is the radioactive alpha particle emission। समझ में? इसलिए periodic table में scientists they predicted some elements। They did not discover those elements but they were able to predict। अगर 92 ही एलिमेंट है और बीच में कोई एलिमेंट नहीं मिला तो उसको वैकेंट कर दिया, वैकेंट स्पेस कर दिया। बाद में सरप्राइजिंगली कुछ एलिमेंट्स मिले तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम लॉजिक, राइट? So this is what this radioactive। Now ये suppose for example ये radioactive element है, suppose ये यूरेनियम, हमें येलो कलर में उसको येलो के को। अब इसमें मास कम हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इमिशन हो रहा है। नाउ दिस एक कुछ ना कुछ तो एनर्जी जरूर होगा। देयर मस्ट बी एनर्जी दैट इज पुशिंग दिस अल्फा पार्टिकल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। लूज हो रहा है तो देयर मस्ट बी एन एनर्जी दैट इज पुशिंग दिस पार्टिकल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तुम जाओ बाहर जाओ चलो, तो एक्सपांशन वाला एनर्जी होगा, डीके वाला एनर्जी होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फा पार्टिकल इमिशन होना है, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल इमिशन में हीलियम बोल सकता हूँ क्योंकि हीलियम का भी मास नंबर कितना है 4 और एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलना या हीलियम बाहर निकलना दोनों ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है या हीलियम बाहर आ रहा है वो सेम ही। और दूसरा जो होता है उसको होते हैं बीटा डीके। बीटा डीके मींस बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू मूव दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आउट ऑफ दिस न्यूक्लियस। ठीक है, इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाता है। अगर प्रोटॉन कम होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी डीके भी हो सकता है। इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो चलते रहे। सो दिस एनर्जी इज नोन एज डीके एनर्जी एंड दिस डीके एनर्जी और आई वुड से दिस एनर्जी कैरिड आउट बाय बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है, कभी कभी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं एंड न्यूट्रिनोज बाहर आते हैं। न्यूट्रिनोज क्या है देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाते। बीटा पार्टिकल मींस डीके प्रोसेस। और तीसरा एनर्जी बाहर आता है गामा रेडिएशन, व्हिच इज वेरी गामा रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो व्हाटएवर वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, गामा रेडिएशन। ठीक है, सो दिस इज रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी is the process where heavy element loses some mass in the form of alpha particle, beta particle, and gamma radiation. In beta decay, some amount of energy turns into neutrinos, electrons, and अगर प्रोटॉन जा रहे हैं तो न्यूट्रॉन भी जा रहे हैं, न्यूट्रिनो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे। तो डीके प्रोसेस, डीके होता है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा डीके में वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ये क्या है बाद में देखते हैं, यहाँ तक समझ में? ठीक है, ठीक है। सो रेडियो एक्टिविटी समझ में आया? रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है, बिकॉज दैट एलिमेंट हैज टू लूज सम मास इन ऑर्डर टू गेट दैट स्टेबिलिटी कंडीशन इन द नेचर। हर किसी को स्टेबल होना जरूरी है। जैसे मान लो तुम्हारा पोस्ट निकल गया, बाद में तुम हिंदू पढ़ोगे नहीं, उसको मानना पड़ेगा कि इवन आफ्टर द सिलेक्शन इफ यू रीड हिंदू न्यूज़पेपर उसको मानना पड़ेगा, वो रियल यूपीएससी है। बट हार्डली एनीवन रीड्स हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, एक तो टाइम नहीं मिलता और पढ़ाई हो चुकी है, उसके बाद कोई पढ़ता नहीं। एक बार आए से फाइनल, उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं, फाइनल एंड राइटिंग पोस्ट निकल गया, बाद में एक ही परीक्षा, शादी। ठीक है, शादी एक परीक्षा है, बिकॉज गेटिंग मैरिड इन इंडिया इज a religious duty, right? And if anyone chooses not to get married, there must be something wrong with the person। Forget about it। Okay, now alpha particle and beta particle। अब इसमें क्या होता है, बीटा डीके पे फोकस करते हैं क्योंकि we need that explanation to understand the carbon। Next topic is what carbon dating। Beta plus decay or beta minus decay। Beta plus decay में a proton is converted into neutron, P is converted into N, that is beta plus decay। And beta minus decay में उल्टा, neutron is converted into
प्रोटॉन, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। सपोज मान लो ये द सरफेस ऑफ अर्थ है, राइट, और आई वुड से समथिंग लाइक दिस इज द अर्थ एट द टाइम ऑफ बिग बैंग एक्सप्लोजन, और जस्ट अर्थ बिगन टू फॉर्म इटसेल्फ। दिस इज द सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन अभी अर्थ राइट नाउ। पहले ये अर्थ होगा रेड कलर में, गुस्सेल अभी तक ठंडा नहीं हुआ, और दिस इज ए मैग्निफिसेंट ब्लू प्लैनेट, कूल हो गया, ठीक है, ठीक है, एग्री, राइट। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा अबंडेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ, ऑब्वियसली रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडिएशन ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यूरेनियम होगा। अब यूरेनियम नहीं, अब क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है क्या, नहीं। इनिशियल इसमें नाइट्रोजन है क्या, नहीं है। एक ही एलिमेंट है, कौन सा, ज्यादा से ज्यादा आयन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यूरेनियम। तो हमारे एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, जो भी गैसेस जो एटमॉस्फेयर जिससे बने ये तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब है, तो इसका मतलब अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज व्हाट, नाइट्रोजन 78%, राइट, एंड 21% इज व्हाट, ऑक्सीजन। सो दीज आर द, आई कुड से एलिमेंट्री एलिमेंट, क्योंकि ये दो एलिमेंट ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेडिएशन हो रहा है, ये जल रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन लगेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्साइड की वजह से। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। नाउ दिस नाइट्रोजन कम्स अंडर कॉस्मिक रेडिएशन। पूरा एटमॉस्फेयर सराउंडेड बाय, सबसे अबंडेंट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, तो ऊपर तक भी क्या है, नाइट्रोजन, तो वो कॉस्मिक रेडिएशन से क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 14, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 7, राइट। बीटा प्लस डी की प्रोसेस होता है, जिसमें वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। एक बात हमेशा याद रखना, बीटा डी के प्रोसेस, बीटा प्लस हो या माइनस हो, एटॉमिक मास नंबर नहीं बदले, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, कोई हमें केमिस्ट्री नहीं सीखनी, पर वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तुम ये समझ लोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा व्हाई रिसेंटली अजीत सिंह मेड a statement that India wanted to rejuvenate the program of pressurized heavy water reactor, right? Why with the help of just yellow color soil you can create dangerous element on the surface of, अगर ये प्रोसेस समझ में आ, ठीक है, तो लिखो मत सब नोट्स में, इधर ध्यान दो, क्योंकि दो जगह पे कभी भी पैर नहीं रहेगा, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, ठीक है, तो यहाँ फोकस करो, ठीक, ओके। सो 14 बीटा प्लस डीके में, अब इसमें मुझे बताओ प्रोटॉन कितना है, 7, न्यूट्रॉन कितना होगा, वेरी गुड, टोटल मास कितना हो गया, 2। अब ये क्या बोल रहा है कि वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है तो एक प्रोटॉन कब होगा ना, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो भी एक्स एलिमेंट आएगा उसका प्रोटॉन नंबर कितना होगा, 6, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, 8, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 8, तो प्लस मास नंबर कितना होगा, 14। समझ में आ रहा है मैं क्या कैलकुलेशन फिर से बता, इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा नेक्स्ट एलिमेंट में, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 8, और ये 7 माइनस 1 होगा तो कितना होगा, 6, लेकिन दोनों का समेशन कितना होगा, 14। नेक्स्ट एलिमेंट में प्रोटॉन नंबर 6 एंड मास नंबर क्या होगा, 14, वो तो कार्बन है, कार्बन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 6, पीरियोडिक टेबल में कार्बन किधर है, 6 पोजीशन पे, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके, समझ में आ रहा है। और दूसरे पार्टिकल निकल से, बस फॉर टाइमिंग कितना ही, ये जो C14 दिस कार्बन 14 इज व्हाट, रेडियो एक्टिव, समझ में आया, बीटा डीके प्रोसेस। अभी उल्टा भी हो, बीटा माइनस डीके में C6 14 बीटा माइनस डीके में उल्टा होगा, वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है, 6, न्यूट्रॉन कितना है, 8, अब इसमें क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट में प्रोटॉन कितने होंगे, 7, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7, क्या बन जाएगा, 14 मास, तो फिर से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, दिस इज द बीटा प्लस डीके है, बीटा माइनस डीके प्रोसेस, वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डीके प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डेटिंग, इंटरचेंज, पर सबसे ज्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन अबंडेंट है, और बीच में बीटा प्लस डीके ही होगा, सॉरी बीटा माइनस डीके ही होगा, ठीक है।
तो ऐसा कोई ये नहीं, बट मोर और लेस कॉम्पोजिशन 78% नाइट्रोजन ही रहेगा और कार्बन 0.03% ही रहेगी। सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका मतलब कार्बन टू नाइट्रोजन बीटा माइनस सपोज। Okay, next topic is very important topic for your MPSC exam. But before that, when we talk about these beta plus and beta minus decay, इसमें और पार्टिकल बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनोज एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा माइनस डीके प्रोसेस होता है तो दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लो बीटा प्लस डीके में जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मान लो कहीं तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी हो रहा है, तो उसमें न्यूट्रिनोज भी आते बाहर, पॉजिट्रॉन भी बाहर आते हैं। आजकल पेट्स क्या आता है, पेट्स क्या है, पीटी, पॉजिट्रॉन इनिशन टोमोग्राफी बोलते हैं। If woman survives from cervical cancer means गर्भपेशीचा कॅन्सर असं म्हणतो. ठीक आहे, नॉट युटेरस. तर त्याला गर्भपेशीचा सर्वायकल, सर्विस इज अ पार्ट ऑफ युटेरस. सर्विस को भी सर्विस. ठीक है. सो फीमेल रिलेटेड कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया और इंडियन वुमेन, वो क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर. मोस्ट कॉमन कैंसर ऐसे जनरल इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, बट इंडिया पर्टिकुलरली सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल दिस. ठीक है, तो ये जो पेट स्कैन होता है जनरली वुमेन क्रॉसेस और 40s और 50s, so generally it is recommended, Maharashtra government has initiated this project that if women crosses or 40s or 50s, you would advise that woman that woman irrespective of her status that woman she goes through this PET scan because earlier diagnosis is the only solution. So it's very ना कि aggressive cancer. ठीक है, तो PET scan all over most of these government institute PET scan फ्री में होता है आजकल. ठीक, so इसलिए वो पॉजिटिव न्यूट्रिनोज, इसका मतलब क्या है, जहां जहां बीटा प्लस डीके, जहां जहां रेडियो एक्टिविटी होता है, मुझे क्या मिल रहा है, न्यूट्रिनोज भी मिल रहा है. राइट, अब इमेजिन करो सिचुएशन, इमेजिन द सिचुएशन दैट सपोज दिस इज ए सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे अमेरिकन सैटेलाइट घूम रहे हैं. राइट, एंड सपोज ईरान इज कैरिंग आउट सम क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी टू डेवलप लिविंग, एडिशनल यूरेनियम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की. यूरेनियम इज व्हाट, रेडियो एक्टिविटी, वो थोड़ी चुप बैठे, वो तो चलती रहेगी. रेडियो एक्टिविटी गोज ऑन irrespective of whether you hold or not, you do not hold. ठीक है, वो तो चलती रहेगा. So it emits neutrinos. And if you have a technology to detect these neutrinos, अभी इधर न्यूट्रिनो हवा में ही है, everywhere. Neutrinos can pass through the soil also. Neutrinos literally can pass through the surface of Earth. Neutrinos can easily pass through your hand. Neutrinos can pass through your body. Neutrinos are the very microscopic. तुम imagine नहीं कर सकते छोटे थे. Initially scientists they thought that these were massless particles, but later on they found that these neutrinos have mass. Neutrinos can travel to a very great distance. समझ में आ रहा है? तो अगर किसी कंट्री से न्यूट्रिनोज या किसी जगह से न्यूट्रिनोज आ रहे या एयर में आ रहे या जमीन या किसी, if I detect these neutrinos around the atmosphere around that particular country, that means something fishy going on over there, right? या न्यूट्रिनोज मुझे हवा में मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं, तो न्यूट्रिनोज कहाँ से आ रहे हैं, दूर से भी आ रहे, कॉस्मिक रेडिएशन से भी आ रहे, तो इसका मतलब कहीं तो भी क्या हो रहा है.